We've already seen how do we generalize the nth harmonic, how do we calculate number of notes and anti-notes. We have derived or generalized those formulas for the case of standing waves when the medium is bounded at both the ends, right? Now we have another possible case. In this case, medium is bound at one end. In other words, the displacement of particle is zero or node will be formed at one end. Whereas on the other hand, an empty node will be formed since the end is open and particles have the freedom to displace. This is what we call fundamental mode or first harmonic, right? And then we have the second possible case while keeping node at one boundary and empty node at the other. This is what we call second harmonic, or we can also call it first overtone, right? Then the next possible combination, third harmonic or maybe second overtone. Another possible combination, fourth harmonic or third overtone, right? Let's just generalize the equation. First of all, this is what we call half wave and this is what we call one complete wave, right? And it is obvious that this distance is nothing but the fourth of wavelength, right? 1 times lambda by 4, 2 times, 3 times, 4 times lambda by 4. So this is what we call 1 times lambda by 4. Now just generalize these equations for frequency and wavelength, right? Let's just write it. This is first harmonic, or we also know it as fundamental mode. Now, let's just first generalize the wavelength. Length of the medium encloses quarter of the wavelength. So we'll write L equals lambda by 4. In other words, lambda 1, yani lambda for first harmonic equals 4 times length. For the second harmonic, 1 times lambda by 4, 2 times lambda by 4, 3 times lambda by 4. So length is 3 times lambda by 4. In other words, lambda 2 is 4L over 3. For third harmonic, 1 times lambda by 4, 2 times lambda by 4, 3 times lambda by 4, 4 times lambda by 4, 5 times lambda by 4. So L is 5 lambda over 4. In other words, lambda for third harmonic is 4L over 5. Then in this case, it is 7 times lambda over 4. In other words, wavelength is 4L over 7. Let's just generalize this equation. Do you see 4L over nothing but 1, 4L over 3, 4L over 5, 4L over 7. So we can generalize this equation for lambda as 4L over n, where this n is bound to take only odd integers. It could either be 1, 3, 2 is not allowed, 5, 4 is not allowed, 7, 6 is not allowed, and so on. So we have mentioned that this n could only take integer values, that too odd integer values. Let's just see the frequency. Now, in this case, since we already know the wavelength and we know V equals F lambda, that is F equals V over lambda. Just place the respective wavelength in this equation and you will get to know the respective frequency. In other words, F for first harmonic would be V over this lambda, which is 4L over 1. In this case, it would be V over this lambda, which is 4L over 3. In this case, it has to be V over this wavelength, which is 4L over 5. वो 5 इधर चला गया. And in this case, we can write V over 4L over 7, with 7 goes here, right? We can also generalize this equation. It is 1 times V over 4L, 3 times V over 4L, 5 times V over 4L, 7 times V over 4L. In other words, we can generalize this frequency as n times V over 4L,
right? And again, this n could only take odd integer values 1, 3, 5, 7, 9, and so on. These are the two general equations for the harmonic and the wavelength. Now, how do they ask these kind of questions in your exams? For suppose they'll ask you कि we have third overtone, उस third overtone के लिए आप बताएं what would be the harmonic यानी frequency की value बताएं, and then साथ में wavelength की भी value बताएं. Let's just see here. Third overtone इसका मतलब होता है fourth harmonic. राइट. फोर्थ हार्मोनिक का मतलब n equals 4 हरगिज नहीं है. फोर्थ हार्मोनिक means fourth possible value of n, and in this case we know that the fourth possible value of 1 is 7. So in order to calculate frequency for fourth harmonic, we'll write it as 7 times v over 4l, right? And in order to calculate the wavelength for this case, we'll write 4L over this N, which is 7. Now, they might ask you to write down the number of nodes and antinodes in third overtone या fourth harmonic. तो क्या ख्याल है? Do we always draw these modes and then we calculate how many modes, how many nodes and how many antinodes are there, or is there a generalized way जिसमें हम simply हार्मोनिक को देखें और हम डायरेक्टली बता सकें कि इसमें इतने नोड्स और इतने एंटी नोड्स होंगे. Let's just generalize it यहाँ से. We know that this is first harmonic, right? How many nodes are there? One. First harmonic, one node. Anti nodes कितने? One anti node, because this is the point where the medium particles are allowed to displace, right? One anti node. Second harmonic के case में we have one, two nodes, and then we have one, two anti nodes. Third harmonic के case में we have one, two, three nodes, and then we have one, two, three anti nodes. In case of fourth harmonic, we have one, two, three, four nodes, and one, two, three, four anti nodes. So we can generalize जिस भी harmonic की हम बात करें when the medium is bound at one end and the open at the other, तो उतने ही nodes और उतने ही anti nodes बनेंगे. In other words, जब ये मुझसे पूछते हैं fourth harmonic के लिए, तो मैं कहूंगी fourth harmonic के केस में 4 nodes होंगे and 4 ही anti nodes होंगे, right? Now that we are done with second case also, there is this third and last case for standing waves. So far we've seen what should be the generalized equation for nth harmonic and wavelength, number of nodes and antinodes when the medium is bound at both the ends and when the medium is open at one of the ends. Let's just see how do we write these general equations when the medium is open at both the ends. One thing for sure, as soon as we mentioned that the medium is open at both the ends, it means that medium particles are allowed to displace at the boundaries. In other words, boundaries पर antinodes बनने वाले, right? So the basic possible combination जिसमें boundaries पे antinodes form हो सकते हैं, it is this one. Two antinodes at the boundaries and then there is this one node in between, right? This is what we call fundamental mode, or it is also known as first harmonic. Then the second possible combination while keeping the antinodes at the boundaries is this one with an additional antinode in between. This is what we call second harmonic, or we also refer to it as first overtone. Then the next possible combination is, again, we have two antinodes at the boundaries with two antinodes in between. This is what we call third harmonic or second overtone. Then we have fourth harmonic and third overtone, right? Let's just generalize the wavelength in terms of length and then generalize frequency in terms of length and velocity. And then we can just
mention कितने number of nodes और कितने number of empty nodes आएंगे. Following the exact same steps we followed in the last two cases. In this case, we have established that the distance between empty node and node is lambda by 4, right? It is 1 times lambda by 4, then 2 times lambda by 4. So we can write in this case length is 2 times lambda by 4. Or in other words, we can just directly take it in the terms of lambda by 2, right? So let's just do this. Let's just take them in terms of lambda by 2. So when we say this is lambda by 4, this is lambda by 4, in other words, we can directly use that the distance between two consecutive empty nodes is lambda by 2, right? Because 1 times lambda by 4, 2 times lambda by 4, it makes lambda by 2. Okay? So we'll just write length is lambda by 2. In other words, lambda is 2 times the length. Now, in this case, एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक 1 times lambda by 2, lambda by 2, then यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 times lambda by 2. Length is 2 times lambda by 2. We can rearrange it as lambda equals 2L over 2. Then, in this case, 1 times lambda by 2, 2 times lambda by 2, 3 times lambda by 2. L equals 3 lambda by 2. In other words, lambda is 2L over 3. Then 1 times lambda by 2, 2 times lambda by 2, 3 times lambda by 2, 4 times lambda by 2. L equals 4 times lambda by 2. In other words, lambda equals 2L over 4. Now that we know the wavelength, let's just put it in the equation to get to the frequency. As we already know, V equals F lambda. That is, F equals V over lambda, where this V is the velocity of sound, lambda is the wavelength, and F is the frequency of the corresponding harmonic mode. Let's just see. Frequency is velocity over wavelength. In first harmonic, what is the wavelength? It is 2L. Frequency is 1 times V over 2L. In case of second harmonic or first overtone, velocity over this wavelength, which is 2L over 2. Let's just write 2L and the 2, let's just shift it here. Then in this case, we have again velocity over wavelength. Wavelength is 2L over 3. Let's just write 2L here, 3 here. Then velocity over wavelength, this wavelength, 2L here, 4 here. Do you see any similarity between these expressions? Let's just first compare the wavelengths. For first harmonic, wavelength is 2L, or we can write it as 2L over 1, right? Because किसी चीज को 1 से divide multiply करें does not makes any difference. For second harmonic, we have 2L over 2. For third harmonic, we have 2L over 3. For fourth harmonic, we have 2L over 4. In other words, generally, lambda is 2L over an integer number which can take all possible values of integer 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Right? How about generalizing the harmonic? For first harmonic, frequency is 1 times V over 2L. For second harmonic, it is 2 times V over 2L. For third harmonic, 3 times V over 4L, and 4 times V over 2L for fourth harmonic. It's 2L, right? So we can generalize it as V over 2L with an integer here, right? And it can take all possible integer values 1, 2, 3, 4, and so on. Now, how do they ask these questions in exams? They say that there is an organ pipe maybe, which is there is an air column which is open at both the ends, right? Write the equation for the frequency and wavelength for, let's just say, fourth overtone. Now, when they said fourth overtone, this goes without saying that they are asking for the fifth harmonic, right? In case of fifth harmonic, we will use our generalized equations. All we have to do is just replace n with the fifth possible value of n. Right? I am emphasizing कि आपको जब वो fifth harmonic कहते हैं तो आपने directly n equals 5 नहीं place कर देना, because दो cases में तो it would work, लेकिन third case में it would lead to the incorrect answer. So always go with this one.
जिस भी हार्मोनिक की बात करें n की वो वैल्यू प्लेस करें, राइट, उतने नंबर पर आने वाली वैल्यू प्लेस करें. In this case, they are asking us to calculate fifth harmonic. In this particular case, n की सारी values are allowed. So n की fifth value will be 5. Let's just place here. It should be 5v over 2l. And wavelength के case में, it should be 2l over 5. Right? Question में ये आपको length और velocity जो भी दे देंगे, just put them into this equation and then you'll get to the final numerical value. Right? Frequency के लिए you will use the unit hertz, and wavelength को you can write whatever was your unit for length. अगर length centimeters में देते हैं तो wavelength centimeters में, meters में देते हैं तो just write it down. फिर again in this case number of notes कैसे निकालें? How do we calculate number of NT notes? Let's just see the trend एक दो cases में and then फिर हम उसको generalize कर देंगे. It is obvious from this case. It is first harmonic, right? And it has one note. NT notes kitne? 1, 2. 2 NT notes. Second harmonic, we have 1, 2. 2 notes. How many NT notes? 1, 2, 3. 3 NT notes. Third harmonic, 1, 2, 3. 3 notes. 4 NT notes. Fourth harmonic, we have 4 notes and 5 NT notes. In other words, we can generalize जिस भी harmonic की बात करें उतने notes और उससे एक ज़्यादा NT note. Now, looking at this particular case, जब वो आपसे fifth harmonic कहते हैं तो आप कहेंगे 5 होने चाहिए notes और 5 plus 1 यानी 6 होने चाहिए NT notes. Let's just solve a few numerical questions from this topic to have an idea if this concept is clear or not. If the fourth harmonic of a stationary wave in a pipe open at both ends is 320 Hz, then what will be the frequency of its third harmonic? Whenever they give you the information about the velocity or the length of medium, we will use the formulas mentioned earlier, right? Velocity or length के terms में. But in this case, for suppose, मुझे पता है fundamental frequency is 1 times V over L. Then second harmonic is 2 times V over L. Third is 3 times V over L. तो मैं इसको generalize करके ऐसे भी लिख सकती हूँ ना. अगर मैं इस fundamental frequency को for suppose f नॉट का नाम देती हूँ तो मैं फर्स्ट हार्मोनिक को कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स एफ नॉट सेकेंड हार्मोनिक को, राइट. थर्ड हार्मोनिक को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 टाइम्स एफ नॉट. फोर्थ हार्मोनिक को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 टाइम्स एफ नॉट, राइट. तो मैं nth हार्मोनिक को कैसे लिखूंगी? n टाइम्स एफ नॉट. इस इंफॉर्मेशन को अब यूज करते हुए इस क्वेश्चन को जरा आंसर करते हैं. आपसे कह रहे हैं एक पाइप which is open at both ends. जैसे ही वो आपको क्वेश्चन में केस मेंशन करें, the very first thing that should come to your mind is इस स्पेसिफिक केस में n की वैल्यूज अलाउड कौन सी थी? क्या वो सारे इंटीजर्स थे या वो ऑड इंटीजर्स थे? When the pipe is open at both ends and when the pipe is closed at both ends, उन दोनों केसेस में हमें याद है n की सारी वैल्यूज अलाउड थी, राइट. तो हमने पहले n की अलाउड वैल्यूज लिख दी. अब अपना क्वेश्चन देखते हैं. आपसे कह रहे हैं फोर्थ हार्मोनिक यानी n की फोर्थ वैल्यू पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी f4, वो है हमारे पास 320 हर्ट्ज. अब आप बताएं व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स थर्ड हार्मोनिक यानी n की थर्ड वैल्यू 3 पर f3 क्या होना चाहिए? First of all, we will calculate the fundamental mode using F4. फोर्थ हार्मोनिक को लेकर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं एंड देन उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को यूज करके वी कैन कैलकुलेट द थर्ड हार्मोनिक. दिस इज व्हाट वी कुड डू. F4 could be 4 times F naught, right? तो मैं इसको रीअरेंज करके F naught निकाल लेती हूँ. We can write F naught equals F4 over 4. In other words, this F4 is 320, this 4 as it is, and it is nothing but 80 hertz, right? This means that the fundamental frequency of the above mentioned case is 80 hertz. Now that we know the fundamental frequency, how difficult it is to calculate the third harmonic. All we need to do is
Multiply the fundamental frequency with third value of n, which is 3. So f3 is 3 times f naught, that is 3 times 80, which is 240 hertz, right? This is how we get to the final answer relating to the fundamental frequency. Had they provided us with the velocity and the length, तो फिर हम वही पिछला वाला formula use कर देते. But इस case में it is easier to go this way. Then, if the fundamental frequency of a stationary wave in an organ pipe that is closed at one end, see, the moment they mentioned that the organ pipe is closed at one end, the very first thing that comes to our mind is, इस केस में n की odd integer values were allowed, right? आप वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन को. आपसे कह रहे हैं fundamental mode is 180 hertz. आपको क्या करना है? What will be the fifth harmonic? Fifth harmonic के लिए मुझे क्या करना है? I just need to multiply this fundamental frequency with fifth value of n. Now the question arises, what is the fifth value of n in this case? 1, 2, 3, 4, fifth should be 9, right? So I need to multiply this 180 with 9. What would be your final answer in this case? 180 into 9, it is nothing but 1620 hertz, right? This is why I mentioned earlier कि do not just go with जिस भी harmonic की वो बात कर रहे हैं directly. Just first list down इनकी permissible values and then see उस number पर आने वाली value कौन सी. Fundamental frequency of an open pipe of length 4 meters is what you need to calculate, right? And see, this time they've provided us with the length and velocity की भी information दे दी है. इसका मतलब है now we don't need to relate it to the fundamental frequency या किसी harmonic को relate नहीं करना. Generally वही V और L वाली equation apply करनी है. Now, pipe which is open, right? दोनों ends पे जब pipe open होता था, n की values कौन सी allowed थी? All possible integers 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And what was the general equation for lambda and for frequency in this particular case? Lambda was 2L over n and frequency किसके बराबर थी? V over this lambda, right? So V over 2L and this n right here. Now, just put in the values. We are to calculate fundamental frequency यानी n की very first value हमने ले लेनी क्योंकि हम इसको first harmonic भी कहते थे. The very first value of n. So it has to be 1. Wavelength क्या आ जानी चाहिए? अच्छा, they did not ask us to calculate the wavelength, तो let's just not calculate it अलग से. Frequency calculate करते हैं. Frequency is 1 times V over 2L. V is given to be 322. Length of the pipe is 4 meters. See, just make sure कि जो length का unit है, velocity में भी distance का वही unit आना चाहिए. क्योंकि we have taken velocity in meters per second, तो just make sure कि length is in meters. अगर वो centimeters में है भी, तो just divide it with 100 to get to the meters. Now, just multiply and divide these values and you will get 40.25 being frequency. It has to be in hertz, right? In the standard unit of hertz. This is how we answer these questions. सबसे पहले specify the case, उसके n की value लिखें. C, V और L वाली equation use करनी है या harmonic को relate करना है. Just put in the values and get to the final answer. Then we have another case. A standing wave occurs within a string of length of string is 3 meters, clamped at both ends. The moment they said clamped at both ends, इसका मतलब है n की सारी values allowed है or I missed 4. Make sure that you write them sequence के हिसाब से 4, 5, 6 and so on, right? और ऐसे केस में हमारे पास general equations क्या आती थी? Lambda was 2L over n and frequency कैसे आती थी? Velocity divided by this lambda which is 2L और ये n आ जाता था यहाँ पर. Now, आपसे कह रहे हैं what will be the wavelength of third harmonic? Third harmonic means n की third value लें which is 3 and place it here. Lambda equals 2L over 3. Length की value is given which is 3 meters. 2 into 3 over 3. This is nothing but 2. Lambda है has to be in the unit of
length, right? Centimeters, meters, जो भी. क्योंकि length is given in meters, just write it down. How do we calculate frequency? N की third harmonic के लिए 3, velocity is given to be, नहीं दी आपको, just take it to be 320, जो भी इन्होंने पिछले क्वेश्चन में दी थी 322. Let's just take it to be 322. And length is again 3 meters. 3 say 3 cancel. Divide these two values and then you will get to the final answer, which is 161 hertz. By the way, they did not ask to calculate this fundamental frequency. So like this frequency for the third harmonic, so the answer should be yehi wala, right? And and had they asked you to draw the harmonics, तो फिर आप क्या करते? दोनों ends से जो आपका सिस्टम है वो क्लैंप है, तो आप दोनों ends पर नोट्स बनाते और फिर आपसे कहा है थर्ड हार्मोनिक, तो थर्ड पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या था? दोनों एंड्स पर नोड के साथ पहले में क्या होता, कोई भी नोड ना आता दरमियान में, दूसरे में एक नोड आ जाता और तीसरा पॉसिबल केस ये था कि दरमियान में दो नोड्स आ जाते, राइट? ऐसी कोई आप एक फिगर ड्रॉ कर देते विथ 3 लूप्स. Then a guitar string has a length of 0.5 meters. If the string is vibrating at a wavelength of 0.25 meters, what harmonic is it vibrating in? यानी आप बताएं फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड फोर्थ कौन सा हार्मोनिक है, बिकॉज हमें पता है लैम्डा की स्पेसिफिक वैल्यू किसी ना किसी हार्मोनिक को कॉरेस्पॉन्ड करती थी, राइट? लेट्स जस्ट सी गिटार स्ट्रिंग की बात करें, दे डिड नॉट डायरेक्टली मेंशन कि आपका मीडियम दोनों इन से बाउंड है, लेकिन इट गोज विदाउट सेइंग कि वो दोनों इन से बाउंड है क्योंकि वो गिटार स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, राइट? फिर जब हम कहते हैं मीडियम दोनों इन से बाउंड है, एन की वैल्यूज सारी अलाउड होती है 1 2 3 4 5. क्या मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या कुछ गिवन है? नहीं, वो फॉर्मूला नहीं मैं अप्लाई कर सकती. लेकिन इन्होंने मुझसे पूछा क्या है, लेट्स जस्ट पे अटेंशन टू इट. आपसे कह रहे हैं कि मीडियम की लेंथ है 0.5 मीटर्स और जो वेव लेंथ है वो 0.25 मीटर्स के बराबर आ रही है. अब बताएं कौन सा हार्मोनिक इसमें बनना चाहिए. रिलेट करें टू दी केस. इन दिस केस वी यूज टू से दैट लेंथ इक्वल्स n टाइम्स लैम्डा बाय 2 और फिर हम इसको अगर n के लिए रीअरेंज कर लें तो वी शुड राइट 2l over lambda, right? What is the final answer? Length is given to be 0.5 meters, wavelength is 0.25, so it has to be 4. यानी ये किस हार्मोनिक में दे रहा होगा ऑसिलेशन? आप कहें n की फोर्थ वैल्यू 1 2 3 4, फोर्थ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है दिस इज द फोर्थ हार्मोनिक, इन अदर वर्ड्स इट इज थर्ड ओवरटोन. और अगर आपको फिर ये ड्रॉ करने को कह दें तो हाउ डिफिकल्ट इट इज? फोर्थ हार्मोनिक है, दोनों एंड्स पर तो हम रख देते हैं नोट्स. पहली पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? दरमियान में एक भी नोड ना हो. दूसरा होता है एक नोड, तीसरे में दो नोड्स. फोर्थ हार्मोनिक की बात हो रही है तो दरमियान में तीन नोड्स आने चाहिए 1 2 3. ओके, सो वी हैव टू लूप्स, थ्री लूप्स, फोर लूप्स एंड देन देयर रिफ्लेक्शंस स्टैंडिंग वेव्स बनाने के लिए. दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, अगर वो आपसे कहते हैं कि इसको ड्रॉ करके दिखाएं तो. Next we have is the introduction to the Doppler's effect. Doppler's effect is the apparent shift in the frequency or the wavelength due to the relative motion of source and observer. अगर source और observer दोनों रेस्ट पर हैं या ये सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ उस केस में Doppler's effect नहीं होगा हमारे पास, right? See, this right here shows that there is a source emitting the sound of frequency 800 hertz. Source is stationary and so is observer. So the frequency perceived by the observer is exactly same as that emitted by the source, right? If we consider the source moving towards this observer, or in other words, moving away from this observer, so जिस observer की तरफ source is moving, he would perceive the compressed wavelengths. In other words, the wavelength would reduce
and consequently frequency will be greater. In sound के case में we relate the frequency with the pitch, right? So pitch of the sound will increase. In other words, apparent shift आएगा frequency में and this observer will perceive the frequency greater than the original frequency. Whereas we have another observer here, source is moving away from this observer, right? So wave here will get stretched. In other words, wavelength यहाँ पर बढ़ जाएगी, frequency कम हो जाएगी. In other words, this observer will perceive the sound of frequency smaller than that of the original frequency, right? These were the two basic cases. We know that there are total of four basic cases in Doppler's effect. हम ये कंसिडर कर सकते हैं ना कि source is stationary, the observer is moving. Observer might be moving towards the stationary source or it might be moving away from the stationary source. Either way, we write the generalized equation. Apparent frequency equals original frequency times V plus minus U naught over V plus minus US. This V is the speed of sound. This u naught is the speed of observer and this us is the speed of source. दोनों में से जिसके बारे में स्टेशनरी की इंफॉर्मेशन दी होगी उसकी स्पीड को सिंपली जीरो कर देंगे, राइट? अगर ये आपसे कहते हैं कि source is at rest and observer is moving away from the source, मुझे पता है अगर कोई ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ साउंड से दूर जा रहा है तो ऑफ कोर्स उसको जो साउंड सुनाई दे रहा होगा उसकी पिच कम होती जा रही होगी, राइट? इन अदर वर्ड्स उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही होगी. तो मैं पहले क्या करूं, पहले अपनी इक्वेशन में सोर्स की स्पीड को जीरो कर दूं बिकॉज सोर्स रेस्ट पर है. डिनोमिनेटर में सिर्फ v आ गया. उसके बाद अगर ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो फाइनल जो अपीरेंट वेलोसिटी है वो कम हो जानी चाहिए. ये रेशो कम कैसे हो सकता है? जब न्यूमरेटर कम हो जाए. इन अदर वर्ड्स इस केस में हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, राइट? और अगर यही आपसे कहते हैं सोर्स इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स दी स्टेशनरी सोर्स, तो क्योंकि वो सोर्स से करीब आ रहा है तो साउंड की पिच बढ़ जानी चाहिए. इन अदर वर्ड्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए. अगेन इस एक्सप्रेशन में मेरा फाइनल आंसर ग्रेटर कैसे आ सकता है? जब मेरे पास यहाँ पर प्लस हो, राइट? तो उस केस में इस इक्वेशन को रीराइट हम ऐसे कर देते हैं. देन वी हैव टू मोर केसेस जिसमें वो आपसे कहते हैं ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी and the source is moving. Now if the source is moving towards the observer तो फिर क्या होगा? मुझे पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए. If the source is moving away from the observer तो फिर apparent frequency कम हो जानी चाहिए. इस इक्वेशन में ऑब्जर्वर को स्टेशनरी कर दें, यानी just put in this u naught equals 0, right? तो न्यूमरेटर में we'll get v and डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज आ रही होंगी. सेम गोज हियर, न्यूमरेटर में we'll get v, डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज आ रही होंगी. नाउ मुझे पता है ऑब्जर्वर अगर टुवर्ड्स दी सोर्स आ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए. ये फाइनल आंसर ग्रेटर कैसे आ सकता है? रेशियो ग्रेटर तब आता है जब या तो न्यूमरेटर को हम इंक्रीज कर दें या हम डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दें. वी हैव ओनली ऑप्शन टू कंट्रोल द डिनोमिनेटर, राइट? इसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हम प्लस प्लेस करते हैं या माइनस. इन आवर केस अगर मैं बढ़ाना चाहती हूँ अपने इस रेशियो को तो मेरा जो डिनोमिनेटर है it should be smaller, यानी यहाँ पर I need to place minus and consequently यहाँ पर I need to place plus, right? So this is how you get to the final answer कि अच्छा ये एक वो equation है, इसको अपने चारों cases के लिए हम कैसे relate कर सकते हैं. जो भी stationary उसकी speed को zero कर दें, फिर relate करें कि pitch बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए इस motion की वजह से, और फिर उसके हिसाब से अपना final answer दे दें. Otherwise you can always make shortcuts. आप कह सकते हैं अच्छा अगर ऑब्जर्वर क्लोजर आएगा तो हम u नॉट को प्लस में ले लेंगे, ऑब्जर्वर अवे जाएगा तो हम u नॉट को नेगेटिव ले लेंगे. एंड द ऑपोजिट फॉर सोर्स, अगर सोर्स क्लोजर आ रही है तो फिर आप us को नेगेटिव ले लें, और अगर सोर्स अवे जा रही है तो फिर आप us को पॉजिटिव ले लें. आइदर वे यू विल एंड अप गेटिंग यही चार पॉसिबल इक्वेशंस. नाउ आपसे कह रहे हैं light emitted from calcium was found to have a wavelength of 397 nanometers, यानी उसकी ओरिजिनल वेवलेंथ जो है it is 397 nanometers. When this
same light from an observation spectrum of a galaxy was measured in the laboratory and X results was found, then state Y. आपसे कह रहे हैं ओरिजिनली वेवलेंथ है ये, बट लेबोरेटरी में जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो जो apparent wavelength थी, it was 454, in other words greater than the actual wavelength. मैं कहूँ wavelength is greater या मैं कहूँ frequency is smaller, एक ही बात है, right? एंड अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होकर स्मॉल हो रही है तो हम क्या कंक्लूड करेंगे? हम कंक्लूड करेंगे द गैलेक्सी इज रिसीडिंग, राइट? इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ. Then, in this case, the observed wavelength is 397, which is exactly the actual wavelength, right? So we'd say there is no shift in the frequency or wavelength. इसका मतलब है the galaxy is stationary relative to the Earth. And in the case जहाँ पर हमारी apparent wavelength is smaller, in other words, apparent frequency is greater, so we'll say that galaxy is moving closer to the Earth. Right? Because we know v equals f lambda, वहां से आने वाली light की speed is constant 3 exponent 8, right? तो यकीनन जब एक increase होगा तो दूसरे को decrease होना पड़ेगा. This is the basic condition we use in maths. Then choose an appropriate option for frequency and direction of traveling for all three phenomena. Frequency के बारे में बताएं, exactly same रहेगी, slightly different होगी, या generalize करके कह देंगे not same. Amplitude के बारे में बताएं, it must be same, must not be same, या vague है, कुछ भी हो सकता है, acceptable होगा. Direction के बारे में बताएं, should it be same या opposite होनी चाहिए, right? This should not be here. पहले जनरल देख लेते हैं ये तीन फिनोमेना कौन से. हमने पढ़ा है मल्टीपल वेव्स कैन एनकाउंटर इन सेम मीडियम, उसको हम सुपरपोजिशन का नाम देते हैं, राइट? तीन तरह का होता है. इफ दीज वेव्स आर ट्रैवलिंग इन दी सेम डायरेक्शन और इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तब ये एनकाउंटर करें तो हम इंटरफेरेंस का नाम देते हैं. इट कुड बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिपेंडिंग ऑन फेज डिफरेंस क्या है दोनों वेव्स के दरमियान. अगर क्रस्ट टू क्रस्ट एंड ट्रफ टू ट्रफ मीट करती हैं तो फिर इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर क्रस्ट टू ट्रफ मीट करती हैं तो फिर इट शुड बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बीट्स के केस में again waves are traveling in the same direction through the same medium, लेकिन उनकी frequency में कुछ slightest difference होता है within 10 hertz. Then we have another case of encounter of waves in the same medium traveling with the same velocity, same frequency, but in the opposite direction. They form stationary waves, right? Now let's just answer these questions. Interference के लिए frequency should be same, direction क्या होनी चाहिए? मीडियम में, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने चाहिए. फेज डिफरेंस 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, 180 होगा अगर तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा. बीट्स के केस में सेम नहीं होती फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी शुड बी स्लाइटली डिफरेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग इज सेम. And in case of standing waves की formation के लिए frequency should be exactly same, direction of traveling should be opposite. यानी अगर एक wave towards right जा रही है medium में और दूसरी towards left आ रही है, जब ये दोनों encounter करेंगी तो जो हमारे पास pattern बनेगा, this is called the stationary waves. Then when two tuning forks A and B are hit simultaneously and a beat frequency of 6 Hz is heard, given that the frequency of A is 90 Hz, suggest the frequency of B. इसके लिए हमें पता होना चाहिए beat frequency is heard whenever there is a difference between the frequency of sound sources, right? What would be the beat frequency? Yeah, beats per second. It equals the difference in frequency of the sources of sound. यानी अगर दो sound sources हैं, एक की frequency है 10 hertz, दूसरे की है 12 hertz, इन दोनों को आप simultaneously strike करेंगे तो जो आपको beats मिलेंगी, it would be 2 beats per second, right? Equals the difference of the frequency. Let's just answer this question. A की frequency is 90, आपसे कह रहे हैं beats are 6, right? इसका मतलब है दोनों की फ्रीक्वेंसी में यकीनन फिर 6 हर्ट्ज का डिफरेंस होगा. नाउ देयर आर टू पॉसिबल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. या तो बी की फ्रीक्वेंसी इज 90 प्लस 6,
या फिर it is 90 minus 6. It could either be 96 hertz or it could be 84 hertz. अगर वो मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, लाइक इस ट्यूनिंग फॉर्क को मैं फर्दर किसी मटेरियल से अगर लोड कर दूं, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाए और फिर बीच में कितना चेंज आए, अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो फिर वी कैन फर्दर नैरो डाउन these two options into one exact answer. Otherwise, these are the two suggested values. When two tuning forks of 10 Hz and 10 Hz are sung together, beat frequency heard as, using the same idea. Beat frequency is the difference of the frequencies of sound sources, right? क्योंकि दोनों की frequencies are exactly same, so beat will not be observed, right? बीट इज आपने कभी पढ़ा होगा, यूज करती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग के लिए भी, राइट? यानी स्टैंडर्ड के तौर पर मेरे पास एक सोर्स आ जाती है, फिर मैं चेंज करती जाती हूँ और मैं देखती जाती हूँ, जब बीट एग्जैक्टली जीरो हो जाए तो फिर मैं कहती हूँ यकीनन ये सेकंड जो हमारा मीडियम है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली मैच हो गई है हमारे स्टैंडर्ड से, राइट? सो व्हेनेवर frequencies are exactly same, beats are not observed. Then let's just see this last question. For destructive interference, I just mentioned earlier क्या होता है? Destructive interference kind of interference ही है, यानी waves same direction में जा रही हैं, इनकी velocity frequency exactly same है, right? And they are meeting so that एक का crust दूसरे के trough से match कर रहा है. See, एक का crust दूसरे के trough को encounter कर रहा है and so on, right? इसकी possible combinations क्या होते हैं? या तो एनकाउंटर होने वाली वेव्स के दरमियान हाफ वेव लेंथ का डिफरेंस उसी हाफ वेव लेंथ गुजरने के बाद दूसरी स्टार्ट हुई है, या फिर वन वेव लेंथ 3 λ/2, राइट? यानी 1.5 वेव लेंथ का डिफरेंस हो, या 5/2, 7/2 एंड सो ऑन, राइट? एंड इन अदर वर्ड्स हम इसको वर्ड कैसे करते हैं? हम कहते हैं जब भी पाथ डिफरेंस इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्रस्ट क्रस्ट से ट्रफ से मीट करता है, और इसके लिए जनरलाइज कंडीशन हम क्या देते हैं? हम कहते हैं पाथ डिफरेंस इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। या तो दोनों वेव्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, या दोनों के दरमियान एग्जैक्टली वन वेव का डिफरेंस है, या दोनों के दरमियान 1 2 वेव्स का डिफरेंस है, 3 4 एंड सो ऑन. So these are the generalized equations, right? Now let's try to answer these two MCQs. For destructive interference, path differences: odd number of half wavelength, even number of half wavelength, whole number of half wavelengths, या even whole number of half wavelengths. This condition right here suggests that the correct option is odd number of half wavelengths, right? क्योंकि it could either be 1 times λ/2, 3 times λ/2, क्योंकि 2 times λ/2 is not allowed, it makes lambda जो कि constructive की condition होती है। ऐसे ही 4 times λ/2 is not allowed because it makes 2 lambda, which is again the condition for constructive interference. Then constructive interference happens when two waves are, again let's just see here, constructive interference happens when two waves are encountering so that the crust encounters the crust and the trough encounters the trough. This is what we call in phase. Both the waves are in phase, right? और जब भी एक का crust दूसरे के trough को encounter करता है तो we say that the waves are out of phase. In other words, they are 180-degree phase apart, right? So in this case, constructive interference के लिए they should be in phase. Destructive का पूछते तो हम कह देते 180 degree out of phase. These are the kind of questions that are included in your papers. Like these were the basic points जो आपको पता होने चाहिए to be able to answer the exam questions. In our next video, we will be solving exam questions, numerical as well as theory based, MCQs as well as CRQs.